नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया उसमें। उसके बाद L40 चरणों में, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, उसमें भी तरल नोदक का भराव सुनिश्चित किया गया। मिशन कंप्यूटर और रडार उपकरणों की स्वास्थ्य जांच की गई। क्रायो आर्म तथा क्रायो अपर स्टेज में फिलिंग के लिए तैयार कर उसमें ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी की जा चुकी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तथा जल परिवहन विभाग से भी अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। हमारे मौसम विभाग से भी पूर्व सूचना प्राप्त की गई है और इस दौरान मौसम पूरी तरह प्रमोशन के लिए अनुकूल बताया गया है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान स्वतः ऑन T-16 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस कंप्यूटर द्वारा सभी जांच पूरी की जाएंगी। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस फॉर द लॉन्च ऑफ GSLV-F16 NSR mission. GS servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. GSLV-F16 mission at the second launch pad. It's getting ready for its first ever mission to sun synchronous polar orbit. Automatic launch sequence initiated for GSLV-F16 and NISR mission. ALS in auto mode. Tank PLO operations commenced. नाइसार उपग्रह L और S बैंड वाले दोहरे बैंड संश्लेषी अपर्चर रडार वाला उपग्रह है, जो उच्च विभेदन के साथ बड़े पैमाने को प्राप्त करने के लिए सीड SAR तकनीक से संचालित होगा। नासा के जेट प्रणोदन प्रयोगशाला, जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी और इसरो के सहयोग से तैयार नाइसार, जो न केवल संबंधित राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि पूरे विश्व के विज्ञान समुदाय की भी डेटा आपूर्ति करेगा। नाइसार के बारे में प्रचलित कथन इस प्रकार है: दो संस्कृतियों का सही सम्मिश्रण और वैज्ञानिक शिल्पकारों की एक उत्कृष्ट रचना का नाम नाइसार है। .7-meter tall GSLV is a 3-stage launch vehicle of 420.5 tons lift-off mass. The first stage, GS1, comprises of S-139 solid booster and 4 strap-ons of liquid L40. The second stage, GS2, is Earth-storable liquid stage of GL40 HT. L40 EGC actuation in The progress. third stage, GS3, otherwise called CUS-15. यह रचना आपके सामने प्रस्तुत है। GSLV-F16 प्रमोचक यान की कुल ऊंचाई 51.7 मीटर, वन भार 420.5 टन का होता है। त्रिचरणीय है यान ही है। प्रथम चरण में S-139 तथा L40 स्ट्रैप-ऑन्स लगे हुए हैं। द्वितीय चरण में L40 में हमारा उपग्रह नाइसार पूरी तरह सुरक्षित है। पेलोड फेयरिंग के अंतर्गत इस समय पेलोड फेयरिंग 4 मीटर व्यास वाली ओजिव पेलोड फेयरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। EGC actuation completed. सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित लॉन्च का अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। GSLV-F16 की उड़ान दक्षिणी दिशा की उड़ान होने जा रही है, इसलिए इस प्रमोचक यान को पूर्णतः ट्रैकिंग रेंज में रखने के लिए 4 भू-स्थित रडार ट्रैकिंग स्टेशंस, जो कि शार त्रिवेंद्राटिका में स्थित हैं, यह यान पर और हम तक सभी आंकड़े वास्तविक समय पर उपलब्ध करेंगे। We are 11 minutes 45 seconds from the launch. Disseminated information about the mission and data characteristics to enable prospective users to take full advantage of the data gathered by NISAR when it becomes available.
सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए सभी तंत्र अभी तक सामान्य कार्य पर हैं और यह आपके सामने है लॉन्च व्यू गैलरी का दृश्य। आप देख सकते हैं बहुत ही उत्साह सभी छात्र छात्राओं पर भारी संख्या पे यहां भीड़ उमड़ आई है इस प्रमोचक यान का अनुभव लेने के लिए। ये शब्दों से बाहर का अनुभव होता है, अपनी आंखों से देखिए क्या उत्साह of the students here at the launch view gallery at Sriharikota. उत्साह देखते ही बनता है छात्रों का। बहुत समय के इंतजार के पश्चात उन्हें यह पल मिला है जब एक बार फिर यह प्रमोशन देख सकते हैं। T-10 minutes. GS2 radar engine actuation in progress. ISRO is bringing to you a curtain raiser for the mission NISAR for your better understanding about the mission. In an era where climate change dominates global discourse, humanity faces an increasing vulnerability to natural disasters. To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, groundbreaking Low Earth Orbit (LEO) observatory promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art LNS-band synthetic aperture radar, SAR systems, NISAR will use the sweep SAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative, from tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes to analyzing seismic shifts and managing disaster response. It will empower scientists, researchers, and policymakers with vital insights. By precisely measuring minuscule movements and colossal environmental events alike, NISAR will help us decode Earth's complex ecosystems and natural hazards. The flagship mission sees NASA contributing the L-band SAR, engineering payloads, critical systems like GPS receivers, and the solid-state recorder. ISRO is supplying the S-band SAR, spacecraft bus, and will launch the satellite aboard through its vehicle GSLV-F16 from Sriharikota. A majestic 12-meter unfurlable reflector antenna will unite the dual-band systems, enabling powerful Earth observations from orbit. The geosynchronous satellite launch vehicle GSLV-F16 features a three-stage configuration. Its first stage comprises a solid rocket motor at the core, supported by 4 liquid strap-on boosters. The second stage operates on liquid propellant, while the third and final stage is powered by an indigenously developed cryogenic upper stage. The payload fairing for the GSLV-F16 NISAR mission features a 4-meter diameter OGIV configuration. The launch will take place from the second launch pad at India's spaceport SDSC Shar at Sriharikota. It is the first GSLV mission to be launched into a sun-synchronous polar orbit. NISAR is not just a satellite, it's a symbol of global unity, scientific excellence, and hope. It promises to safeguard our future by helping humanity live more wisely with nature.
T-6 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम 6 मिनट दूर हैं उड़ान से। इस दौरान आपको इस प्रमोशन का विवरण देते हैं। GSLV Mark II 3 चरणों से बना हुआ प्रमोशन ज्ञान है। प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला S139 कोर स्टेज बूस्टर है, जो कि PSLV से व्युत्पन्न चरण है, लेकिन इसमें प्रथम चरण के साथ 4 L40 तरल नोदक वाले स्ट्रपॉन बूस्टर संलग्न रहते हैं। L40 स्ट्रपॉन विकास इंजन द्वारा संचालित किए जाते हैं। कोर S139 मोटर के साथ मिलकर कुल 8000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। यह प्रणोद आवश्यक होता है यान के उत्थापन के लिए। प्रथम चरण लगभग 112 सेकंड प्रज्वलित रहकर यान को 54 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा तथा इस समय 24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति होगी। L40 स्ट्रपॉन 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहता है। इसके बाद लगभग 600 मिलीसेकंड बाद द्वितीय चरण प्रज्वलित होता है और इसके तुरंत बाद प्रथम चरण के यान से पृथक कर दिया जाता है। द्वितीय चरण फिर से तरल नोदक वाला चरण है। द्वितीय चरण विश्वसनीय विकास इंजन के साथ 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। यह लगभग 146 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 338 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति पर ले आएगा। द्वितीय चरण के दौरान यान से ऊष्मा कवच यानी पेलोड फेयरिंग को अलग कर दिया जाता है और यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपना दिशा निर्धारण करता है। द्वितीय चरण की समाप्ति के पूर्व ही तृतीय चरण, जो कि क्रायोजेनिक ईंधन वाला चरण है, उसे प्राधिकृत किया जाता है। T-4 minutes. द्वितीय चरण के पृथक्कन के तुरंत बाद GSLV का तीसरा और सबसे जटिल क्रायो इंजन प्रज्वलित होता है। क्रायो चरण के पूर्ण प्रज्वलन की पुष्टि हो जाने पर उसमें 11% अतिरिक्त प्रणोद के लिए कमांड दिया जाएगा। इसमें CE 7.5 इंजन का क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जा रहा है, जो कि 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह संवर्धित प्रणोद के साथ यान लगभग 400 सेकंड में 780 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा और सापेक्ष गति 4.57 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके पश्चात क्रायो चरण को पुनः सामान्य प्रणोद के लिए कार्यशील किया जाएगा और फिर 400 सेकंड पर वह 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त करेगा और अंतरिक्ष यान को अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त करेगा। यह पूरा कार्य लगभग 1115 सेकंड पर पूरा किया जाएगा। We are about 2 minutes and 50 seconds from the launch. Let us take a quick look at the mission events for GSLV-F16 NISAR mission. The L40 strap-ons ignite 4.8 seconds ahead of T0 so that their nominal thrust can be ascertained before igniting the booster. Liftoff coincides with the ignition of S139, also called as GS1 at T0. The burn time of GS1 is 112 seconds and that of the L40s is 149 seconds. By the time GS1 and L40s finish their operation, the launch vehicle is at 104 kilometers altitude. In a staging event typically called as hot separation, the GS2 stage is ignited 600 milliseconds after the L40 thrust cutoff and 1.6 seconds later, the stage separation takes place. When the launch vehicle reaches 138 kilometers altitude, the dense atmosphere would have cleared. Since the need for thermal shielding and aerodynamic shape is no longer significant, the payload fairing is jettisoned. Closed loop guidance also is initiated. At this point of time in the mission, the launch vehicle would have acquired 2.1 kilometers per second relative velocity. For the present mission, the burn time for GS2 is 140 seconds. It is separated 4 minutes 53 seconds into the flight. The third stage is the cryogenic upper stage, which plays a significant role in the mission. Its high specific impulse together with a long burn time of more than 13 minutes, it adds tremendous relative velocity to the launch vehicle. The CUS operation adds 376.55 kilometers stand in by for the altitude time mark.
and T increases minus 1 relative minute. velocity from 3.5 kilometers per from second to 7.5 minus kilometers 55 per seconds. second. An operational philosophy unique Minus to the 50 seconds. GSLV-F16 NISAR Sequence mission is around. that cusp stage is operated by 11% Minus for the 45 duration seconds. of 405 seconds. About 11 minutes into flight, Minus the 40 cryogenic seconds. upper stage shuts down. The satellite NISAR is separated to 35 be seconds. injected into an altitude of 745.5 Minus 30 kilometers seconds. with a relative velocity TSI of program 7.57 kilometers per second. Minus 25 seconds. We are mere 25 seconds from the launch. All the movies open. Minus 20 seconds. सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए। Minus 15 सर्वप्रथम seconds. टी माइनस 4.8 सेकंड्स पर L40 का प्रज्वलन हम देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. That's a Speed magnificent tracking. of the GSLV Lift off F16 normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा 4 बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S139 solid core motor and 4 L40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharwan is in main auto. The day of launch Plus wind 1 biasing minute. program that is fed into the onboard computers helped the rocket to Shah veer 2 is through in the main auto. atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ First जा रहा stage है। performance normal. Currently the rocket is in open loop guidance. Shar ground station is tracking. S139 burnout. कोर बूस्टर का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। Here Plus we have 2 an minutes. announcement from the range operations director that the booster has stopped its operation. The 4 L40s are thrusting still. First stage performance normal. प्रथम चरण का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान उद्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। L40s प्रज्वलित हैं। इनका कुल कार्यकाल 150 सेकंड का होगा। L40 shut off. GS2 ignited. GS1 separated. 1S. IS 1/2 main separated. जी हाँ, अभी आपने सुना रेंज ऑपरेशन निदेशक ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है Payload तथा fairing separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Marking Closed loop the guidance milestone in initiated. the flight, the GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance यान normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। Powered by the Vikas engine that uses the Earth-storable propellant combination of UH-25 and N2O4, the second stage of GSLV develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 140 seconds.
+4 minutes. दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर सभी Second उत्साहित stage इस प्रमोशन performance को लेकर। normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। इसमें इस चरण में US-25 तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह विकास इंजन द्वारा संचालित है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Cryo stage start authorized. जैसा कि हमने पहले बताया था, द्वितीय चरण Second प्रज्वलन stage के दौरान performance ही normal. तृतीय चरण को अनुमोदित कर दिया जाएगा। There is a confirmation of the authorization of the third stage or the cryo stage GS2 thrust cutoff. operation. The GS2 second stage separate. has completed Cascade its ignition operation and has commanded. been jettisoned from the ongoing vehicle. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के पश्चात Cryo इसे stage यान से ignition पृथक कर दिया confirmed. गया है और तृतीय तथा अंतिम चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The यह बहुत ही cryogenic जटिल चरण है। इसके साथ ही दर्शकों का उत्साह, यह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाएगा। The cryogenic upper stage has commenced its operation. Cryo stage operating at operated level. The CUS stage with CE 7.5 engine with liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen as oxidizer with a nominal thrust of 73.55 kilonewton. In this mission, there will be a thrust upratement of 11%, that is Cryo stage performance normal. 4 kilonewtons for about 405 seconds. +6 minutes. वर्तमान में तृतीय चरण क्रायो अपर स्टेज कार्यरत है। इस दौरान यह लगभग 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। यह चरण लगभग 850 मिनट सेकंड्स तक जारी रहेगा। वर्तमान में सापेक्ष गति 3.49 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 514 किलोमीटर की हो चुकी है। Cryo stage performance normal. Altitude of 528 kilometers. Shower and Trivandrum stations continue to extend tracking and telemetry support. When the cryo stage had commenced action, the instantaneous relative velocity was 3.5 kilometers per second. While the end of thrust upratement, it becomes 4.5 kilometers per second. For the next 400 seconds that follow, there is a significant addition in the relative velocity of up to 7.5 kilometers per second. Cryo stage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी बनने के लिए। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इस दौरान भू स्थित रडार स्टेशन शार तथा त्रिवेंद्रम इसे भलीभांति ट्रैक कर रहे हैं। The altitude gained during thrust upratement is about 400 kilometers in cryostage operational regime. When the thrust upratement ends, there is a considerable increase in relative velocity at a marginal loss of altitude. +8 minutes. तृतीय चरण की यात्रा लगभग 850 सेकंड्स तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक Cryo एपर्चर stage रडार, performance normal. जिसे संक्षिप्त में NISAR कहते हैं, वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खतरों और विनाशकारी घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेगा। उपग्रह की बादलों को भेदने की क्षमता के कारण यह तूफान और बाढ़ जैसी मौसमी आपदाओं के दौरान त्वरित व सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया समुदायों को मदद मिलेगी। यह बर्फ की चादर, ग्लेशियर और समुद्री बर्फ में
परिवर्तन जैसे प्रमुख वैश्विक पृथ्वी अवलोकन को प्रदान करेगा। साथ ही वनों की कटाई, वनाग्नि तथा स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई जमीनों का अवलोकन करने में भी सक्षम होगा। यह एक अग्रणी मिशन है जो कि पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का खजाना प्रदान करेगा। इन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए लगभग 9000 किलोमीटर दूर वैज्ञानिक आपस में जुड़ चुके हैं तथा आपसी सहयोग से इस महत्वाकांक्षी मिशन को एक व्यापक लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। NISAR, or the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, is a remarkable milestone in the Indo-US space ties. Designed on the I-3K mainframe bus, NISAR will render services for the next 5 years according to free and open data policy. NISAR provides a means of disentangling and clarifying spatially and temporally complex phenomena ranging from ecosystem disturbances to ice sheet collapse and natural hazards including earthquakes, tsunamis, volcanoes, and landslides. ISRO has identified a range of applications of particular relevance to India that the mission will address, performance normal, including monitoring agricultural biomass over India, monitoring and assessing disasters to which India responds, studying snow and glaciers in the Himalayas, and studying Indian coastal and near-shore oceans by monitoring annual changes in bathymetry along the deltaic regions, shoreline, and erosion accretion. The changes that Earth is undergoing in its ecosystem, deformation, and cryospheric sciences emphasizes the urgent and constant need to observe Earth from the vantage of space in order to thrive on our changing planets in decades to come. NISAR offers centimeter-level precision capable of detecting subtle ground shifts and environmental changes. Data from NISAR will provide critical insights to help India and US plan for natural and Cryostage performance human-caused normal. hazards. Today, when the GSLV-F16 rocket of ISRO places NISAR in its intended orbit, a critical deployment event, that is, of the 12-meter wide mesh reflector will take place. This mesh reflector acts as a radar antenna. The deployment will be a slow sequence to ensure the delicate boom and antenna unfold without damage or misalignment. The deployment will begin 10 days after launch and will be carried out over the next 8 days. Plus 12 minutes. To prepare NISAR for science operations, in-orbit checkout, physical deployment of all deployable parts, checking out the engineering systems, testing the radars independently and jointly. This phase will last for 90 days after the launch. Extensive calibration and validation activities will take place throughout the first 5 months. The schedule of science observations alone will be driven by a variety of inputs, including L and S band target maps, radar mode tables, and spacecraft and ground station constraints and capabilities. तृतीय चरण क्रायोपर स्टेज का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। वर्तमान में सापेक्ष गति 4.9 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 787 किलोमीटर की हो चुकी है। पृथ्वी की भूमि तथा बर्फ का अध्ययन करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार की क्षमताओं का उपयोग करते हुए माइक्रोवेव संकेतों को पृथ्वी में भेजता है और फिर सतह के से परिवर्तित संकेतों को प्राप्त कर 3D चित्र तैयार करता है। इसके लिए इसमें 12 मीटर व्यास वाले अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना लगे हुए हैं। यह उपग्रह 12 दिनों में 2 बार एक ही जगह से निकल सकता है और इस समय में चित्र में बदलाव से
पृथ्वी में की सतह पर आए बदलावों का अध्ययन कर सकते हैं। नाइसार अंतरिक्षयान नासा और इसरो द्वारा तैयार की गई सबसे उन्नत रडार प्रणाली वाला उपग्रह है। यह अन्य सिंथेटिक अपर्चर रडार की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। इसमें 2 रडार निदभार लगे हुए हैं। एक नासा द्वारा तैयार किया हुआ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ का एल बैंड रडार सिस्टम है तथा दूसरा इसरो द्वारा तैयार किया हुआ 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ का एस बैंड रडार सिस्टम है। इसमें हर एक प्रणाली विभिन्न विशेषताओं के मापन में माहिर है, जैसे कि मिट्टी में नमी, सतह का खुरदरापन और गति। निसार सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में काम करने जा रहा है। इसके एंटीना एक खास विन्यास में अंटार्कटिका का अभूतपूर्व अवलोकन कर सकेंगे। यह अंटार्कटिका के बर्फ की चादर, विरूपण और पिघलने के सटीक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नाइसार अंतरिक्षयान दैनिक आधार पर सबसे अधिक डेटा उत्पादन करेगा। यह 3 साल के मुख्य मिशन के दौरान 100 पीटाबाइट डेटा उपलब्ध कराएगा, जो कि प्रतिदिन 80 टेराबाइट डेटा के बराबर है। इतने बड़े डेटाबेस के कारण इसे क्लाउड के माध्यम से संसाधित, संग्रहित और वितरित किया जाएगा। सभी एस बैंड और एल बैंड डेटा इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के माध्यम से भारत सरकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। यह मिशन दोनों देशों के सिंथेटिक अपर्चर रडार की अनुभवी श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला है। नासा ने 1978 से CSAT से शुरुआत करते हुए तब से इन प्रणालियों की श्रृंखला ने विमान व अंतरिक्ष से विज्ञान क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अग्रणी रहे हैं। इसी तरह भारत इन अनुप्रयोगों में विस्तृत श्रृंखला 2012 में रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 और 2022 में RISAT-1A की श्रृंखला शुरू की। नाइसार व्यापक स्वाद के साथ उच्च रिजोल्यूशन के डेटा निरंतर प्रदान कर सकेगा। We are 16 minutes, 15 seconds past the launch. Now the cryogenic upper stage is currently thrusting. The vehicle trajectory correctly follows the prediction. Cryo stage performance normal. तृतीय व अंतिम चरण GSLV Mark II का क्रायो अपर स्टेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करते हुए, सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में कक्षा की स्थितियां प्राप्त करते ही क्रायोजेनिक इंजन को बंद कर दिया जाएगा। The launch vehicle is at an altitude of 748 kilometers. कक्षा की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह नाइसार को अंतःक्षेपित किया जाएगा। Eagerly awaiting the satellite separation event. Cryo stage performance normal. Plus 18 minutes. वर्तमान में सापेक्ष गति 7.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 745 किलोमीटर हो चुकी है। परफॉर्मेंस नॉर्मल। The cryo stage is performing nominally. Cryo stage thrust cut off. The thrust has been cut off of the cryo stage, and next event is the NISAR separation, which is perhaps very close. जी हाँ, जैसा अपेक्षित था। NISR spacecraft separated. GSLV-F16 NISR mission accomplished successfully, handed over to the mission direction.
जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। This is प्रमोशन mission मिशन director. पे सफलता प्राप्त की जा चुकी है। GSLV-F16 vehicle has successfully injected the NISR satellite into its designated injection orbit. The GSLV-F16 NISR mission is successfully accomplished. History has been written today as NISR has been placed in the orbit successfully. Many hearty congratulations to ISRO, NASA and the users worldwide who will derive benefits of the Earth observation with this state-of-the-art NASA-ISRO synthetic aperture radar satellite. Do stay tuned. Tune in for the address by Secretary DOS and Chairman ISRO and mission executives. We take leave from you. Namaskar. इस प्रक्षेपण के साथ नाइसार का प्रमोशन मिशन सफल होता है। आप सभी दर्शकों और वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप सबको इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन तथा विशिष्ट वैज्ञानिकों के शुभ संबोधन के लिए चलते हैं। இது நான் CS announced. Project director also, project satellite project.
Please. On. Very good evening to all of you. I am extremely happy to announce that GSLV-F16 vehicle has successfully and precisely injected the NASA-ISRO synthetic aperture radar satellite, NISR satellite, weighing 2,393 kg into its intended orbit. Let me congratulate all the teams from ISRO and NASA JPL on this outstanding success. This is our 102nd launch from Sriharikota and the 18th mission of GSLV. As all of you may recall, we had the previous GSLV-F15 mission on 29th January 2025, which was the 100th successful mission launched from Sriharikota, and also the first launch after the new management, including me, took over as the chairman of ISRO. This is the first GSLV mission to the Sun synchronous polar orbit. Till date, all the GSLV missions have been to GTO. Being the first SSPO mission, several analyses and studies were carried out to make this mission a grand successful mission, including the cryogenic upper stage corrections. A host of mission simulations were carried out very systematically and meticulously, and today's successful mission is accomplished. All the vehicle system performance were quite normal, as expected and as predicted. And today we achieved the intended orbit. Actually, we have got the orbit with a dispersion of less than 3 kilometers as against the permissible level of 20 kilometers. Perigee, the specification is 742 kilometers. We have got 740 kilometers. Apogee, 745 kilometers is the specification. We have got 747 kilometers. And all the parameters are as expected and in the right line. And this accomplishment is a teamwork, culmination of the teamwork of both ISRO and JPL NASA. The NISR satellite is a significant milestone for both Department of Space and NASA JPL, being the first joint development project undertaken by the two major spacefaring nations. NISR is an all-weather, day-night imaging satellite that will scan the entire Earth at 12-day interval. The satellite integrates ISRO's S-band synthetic aperture radar payload with NASA's L-band SAR payload and 12-meter unfurlable reflected antenna to become the first of its kind, a dual-frequency SAR satellite. NISR will enable the scientific community to detect the surface variations, sea ice detection, investigate natural hazards, monitor soil moisture, and many other applications. The potential applications from the satellite are huge, and the global scientific community is eagerly awaiting the satellite data for their respective research and usage. The implementation arrangement between ISRO and NASA for a joint Earth observation satellite mission was signed on 30th September 2014. It was signed by the then Chairman ISRO, Secretary Department of Space, Dr. K. Radhakrishnan, who is sitting in front of us, and with the NASA Administrator, Mr. Charles Bolden. In fact, we were so happy to participate in that function which happened in Toronto. Since then, the realization of satellite in ISRO progressed steadily under the outstanding leadership of subsequent Chairman, Sri Kiran Kumar Sir, who is also present in the audience, Dr. K. Sivan, Dr. Somnath, and also under different project directors. On this occasion, let me congratulate all of them. Also salute each and every one of the team members who have contributed for this significant achievement. Let me also congratulate all the technical teams, administrative teams both in NASA, JPL and ISRO, who worked shoulder to shoulder to build the satellite at UR Rao Satellite Center over the past so many years.
The NSR mission has brought the two space agencies much closer than ever before, and the continuous interactions at various levels during the course of project execution has enriched both sides. On behalf of Department of Space and ISRO, let me thank the NASA JPL team and all other stakeholders in the project for their excellent contribution to the joint mission. Also congratulate them on the successful launch. We wish the scientific community from both sides the exciting days ahead. Let me also congratulate the ISRO teams from SAC, URSC, VSSC, IASU, IPRC, LPSC, ISTRAC, and all the teams involved in the payload development, satellite integration, realization of solid, liquid, and cryogenic stages, inertial systems, and the launch vehicle itself. Let me take the opportunity to congratulate the Chairman Launch Authorization Board, all the center directors who are with me. It's a teamwork done by ISRO along with the NASA. I express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who as the Minister of Space has provided outstanding, encouraging support for the entire project for its successful execution today. Also, let me thank Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh ji, and the PMO officials. PMO officials who are working hand in hand with the Department of Space, and all our family members, entire team members of ISRO, and the academia and industrial participants who have contributed for this. I think at this point of time, this success is demonstrating a teamwork, a international teamwork between two spacefaring nations, and surely this data is going to be highly useful for the scientific community of the globe. And when every 12 days when the data is going to come, it is not going to be used by one or two countries. The entire globe is going to benefit out of this great accomplishment. And at this point, once again, let me congratulate all the team members, our family members, industrial partners, academia team, and the NASA team for the outstanding work. At this point, before I hand over to my team, let me invite Cassie Swiles, Deputy Assistant Administrator at NASA, for expressing her thoughts on the journey so far in this joint outstanding mission. Madam, please, floor is yours. Yeah, please. Well, I first have to start with go ISRO, go NASA, go NISAR. So I am honored to be here today in the ISRO Mission Control Center. It's just truly been an incredible visit so far, and I have to tell you, I had an opportunity. I'm sitting next to our charge. It's just an honor to have you here, so thank you, sir, for being here. The former ISRO chairman, I looked at him right after the launch, and I said, so how does it feel to not be on console? He said, well, it's a different seat, so it's good to not be in the hot seat. So I'm glad you got to watch the launch and enjoy it. But on behalf of NASA, I want to congratulate all of the teams. It has been just an incredible decade culminating in this moment, from the technical collaborations, the cultural understandings, getting to know each other, building that team across continents, across time zones, missing nights, missing weekends with families, holidays. It is truly something that every single person in this room should be proud of. I am so proud. I was so proud to be out there watching this launch. Dragonflies flying above, it just picture perfect, and I could not be more proud of these teams. You know, and this mission, it's truly a pathfinder, not just in regards to our technical collaborations, because those are truly incredible. This Earth Science mission is one of a kind and really shows the world what our two nations can do. But more so than that, it really is a pathfinder for the relationship building that we see across our two nations, you know, across India, the United States, building upon decades of collaborations that already existed. And I cannot
be more proud to be here representing the U.S. and really representing the teams that have been working so closely behind the scenes to make this happen. I also want to thank, I saw, several family members, both, last night on the U.S. side. I saw several family members here. So I want to thank the families. It's no small sacrifice seeing your loved ones work day in and day out on a mission that takes over a decade to build. So thank you for your support of the incredible, technical, talented people in this room. And I really, really cannot wait for continued partnerships as we go forward, building on Chandrian, Axiom 4, and now NISAR. So thank you. Congratulations. Go NISAR. Go India. Go the United States. Congratulations once again. Now, all the chief executives of the project and all the center directors of ISRO who are responsible are with me here. So let us start with Sri Thomas Kurian, who is the mission director and project director of GSLV for this vehicle. Yes, Mr. Thomas Kurian. Thank you, sir. Good evening, India. Good evening, ISRO. Beloved Chairman ISRO and Secretary DOS, Dr. V. Narayanan, sir. Distinguished dignitaries, respected formal chairmen, center directors, the NASA JPL teams present here at Sriharikota, and those joining us online, the entire ISRO fraternity, and my dear fellow countrymen, a very good evening to all of you. Today, we witnessed a historic moment in India's space journey with the successful launch of GSLV-F16 NISAR mission, the 18th flight of GSLV, and for the first time, this vehicle has been operated for a sun-synchronous polar orbit mission. I am proud to announce that GSLV has delivered its best performance, ensuring precise injection of NISAR spacecraft into its designated injection orbit with remarkably low dispersion. This marks a significant milestone not just for ISRO, but also for international cooperation in space, particularly the partnership between ISRO and NASA. The success of this mission underscores our collective technical excellence, operational discipline, and collaborative spirit. I take this opportunity to extend my deepest gratitude to our respected chairman, Dr. V. Narayanan sir, for his continuous guidance, motivation, and confidence in our team. I sincerely acknowledge the support from ISRO center directors and the various review forums for their meticulous reviews, insightful recommendations, and timely decisions, all of which ensured the smooth execution of this specific mission. This success is the result of immense teamwork and commitment. I offer my heartfelt thanks to the system development agencies across ISRO centers, our industrial partners, the assembly integration, facility, quality control, quality assurance teams, and the administrative and auxiliary teams who work tirelessly behind the scenes. To all my esteemed colleagues and the families, a big thank you. This achievement belongs to each one of you. Our best wishes now go to NASA and ISRO teams for the next phases, culminating in the placement of the spacecraft in its final science orbit, where it will begin a mission that promises to bring game-changing data for Earth science and disaster monitoring. Before I conclude, I would like to place on record my sincere appreciation to Vehicle Director Dr. M.B. Dhanasekaran, Associate Vehicle Director Srimati Asha Mary Matthew, Associate Project Director Sri Binny Matthew, and Deputy Project Director Mission Srimati A.V. Mercy, and all my core team members from GSLV project. Your dedication, technical rigor, and mission focus have been the cornerstone of this major accomplishment. Let this day inspire future generations and reinforce our resolve to push boundaries and lead in global space exploration. Thank you. Jai Hind.